morning, everyone. How are you all? I hope everybody is fine there. Okay, today what we are going to do is we are going to learn certain words. Uh, like when we go for shopping, ठीक है? तो shopping में कौन-कौन से words use होंगे? For example, like if we ask about some price, ठीक है? हमें कैसे पूछना है, right? The size, clear? Okay. And what else? How to compare. अब हम compare कैसे करते हैं? We compare means the words we are going to use for comparison. Like comparison in sense, comparison in size, quality, right? Price. This is all we are going to learn. And like we are going to learn about prepositions also. Preposition of location, where the particular thing is, shop कहाँ पर है, right? Something like that. And particular nouns, जैसे कि एक particular shop को क्या बोलते हैं? There may be a new word for you, which is greengrocer, right? अब greengrocer, what is greengrocer? थोड़ा सा सोचोगे तो अब grocer who is selling something green, but greengrocer कौन होता है? Greengrocer is a person who sells fruits and vegetables. ठीक है? Now what is confectionery? What is difference between confectionery and other shops? Bakery. ठीक है? Something like that, which we are going to learn today, right? So we will first watch the video, then we will discuss about other things, right? Okay. Welcome to the learning activity, Buying Things. This activity covers words used while buying things, words for asking questions about products, price, size, color, flavor, words for comparing products, nicer, better, small, too big, nouns for people or shops that sell a particular kind of product, greengrocer, florist, confectionery, chemist, words for asking and giving directions. When we buy things, we ask questions to get information about them. To ask these questions, we use words such as how much, what size, which color, or what color. For example, how much for this watch? What is the size of these shoes? What colors do you have in jeans? Note that the questions that we ask depend on the type of thing we are buying. For example, when we buy clothes, we ask questions about their color and size. On the other hand, when we buy fruits and vegetables, we ask questions about their flavor and freshness. For example, are these tomatoes fresh? Or, are these mangoes sweet? Of course, we ask the price of everything we buy. When we buy things, we often compare them with other pieces before choosing what we like. We compare the price, quality, design, or look of the products to select what we want to buy. Let's take a look at the words we can use to compare products. To compare size, we can use small, smaller, big, bigger, large, larger. For example, this cap is too small for me. I need a larger cap. To compare quality or look, we can use better or nicer. For example, this sari looks better than the other two. I'd like to buy this one, please. To compare price, we can use expensive, more expensive, costly, cheap, cheaper. For example, this bracelet is too expensive. Can you show me something less costly? Look at the names of shops in the picture. The names tell us about the kinds of things we can buy at a particular shop. For example, we can buy items of everyday use at a departmental store. We can buy food items at a grocery and medicines at a pharmacy. Sometimes we use the same words for the shop and the seller. For example, we can call a grocery shop grocers. A grocer is someone who sells grocery. Let's now look at some prepositions. Words related to directions and the location of places or things. We can use the prepositions left and right to talk about directions. We can use in
at, next to, beside, in front of, and behind to talk about the location of things. Look at the picture and read the sentences to understand the meaning of the prepositions. Let's sum up what we have learned so far. In this learning activity, you learnt words used while buying things, words for asking questions about price, size, color, or flavor. For example, how much is that watch for? What is the size of these shoes? Are there any other colors in this fabric? Are these vegetables fresh? Words for comparing products. For example, this sari is better than the other two. This bracelet is too expensive. Nouns for people or shops that sell a particular kind of product. Greengrocer, florist, confectionery, chemist. Prepositions for asking and giving directions. Left, right, at, next to, behind, in front of, besides. Congratulations! You have completed the learning activity, buying things. AUGIC Jaspur, if you are getting me, raise your hand. AUGIC Jaspur, बेटा मेरी वॉइस आ रही है तो raise your hand. Okay. How many of you know कि जहाँ पर मेडिसिन मिलती है उस शॉप को क्या बोलते हैं? किस किस को पता है? रेज योर हैंड. जहाँ पर मेडिसिन मिलती है उस शॉप को क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल दैट शॉप? केमिस्ट. व्हाट इज इट कॉल्ड? केमिस्ट या फिर मेडिकोज, है ना? चलो अच्छा, वेयर लाइक वी गेट फ्लावर्स, ठीक है ना? फ्लावर्स जहाँ हमको मिलते हैं उस शॉप को व्हाट डू वी कॉल? चलो, now again let's come on to next exercise. Here is a conversation between a lady and an assistant at a shop. Now based on your understanding of the conversation, speak to the class on three things. Now this is some activity for you people, right? And it is a conversation, right? Two things you found interesting and want to know more about, and ask one question on what you have learned. ठीक है? You may ask any question. Okay? So what the conversation is going on? Assistant. अभी देखो, like ये एक शॉप है जहाँ पर एक क्लोथ्स का शॉप है. Clear? And the conversation is going between a customer and the customer is, name of the customer is Lisa, right? And some of the assistants in that shop is helping her. ठीक है? तो assistant when she enters, Lisa जब जो है शॉप में घुसती है तो what assistant says, can I help you? आप भी जाते हो ना शॉप में, मम्मी के साथ कभी जाते हो तो फिर शॉपकीपर बोलते हैं, या फिर अगर आप किसी मॉल में जाते हो तो वहां पर somebody is there to help you, तो क्वेश्चन तो करते हैं ना, how can I help you या फिर can I help you, right? So same thing is written here. Can I help you? What Lisa says? Yes. How much does this skirt cost? अब वहां पर स्कर्ट है and she is asking for its price. ठीक है? स्कर्ट का कॉस्ट पूछ रही है. असिस्टेंट इज सेइंग, नाउ देखो कॉस्ट वर्ड यूज करेंगे. जस्ट सी ईच एंड एवरी वर्ड, ओके, व्हेन वी गो फॉर शॉपिंग. एंड पर्टिकुलरली इन इंग्लिश हम लोग कैसे वर्ड्स यूज करते हैं, राइट? यू हैव टू see them properly. Okay? Now, assistant is answering. It is for 400 rupees, ma'am. Can I try it on? Lisa says. Assistant is saying, yes. What size are you? अभी साइज पूछना है ना. आप ड्रेस अगर आपको भी पसंद आता है तो यू विल आस्क फॉर साइज, द पर्सन विल आस्क फॉर साइज कि आपका साइज क्या है. तो अगर आपको पता है तो यू विल टेल योर साइज. ठीक है ना? स्मॉल है, मीडियम है, या फिर इन नंबर्स है, 10 है, 20 है, 30 है, वट एवर इज योर साइज, यू विल स्पीक. ओके? सो शी सेज कि आई डोंट नो, उसे पता नहीं है कि उसका साइज क्या है. तो असिस्टेंट जो है देख के थोड़ा सा व्हाट ही सेज कि ओके यू कैन ट्राई साइज 10. ठीक है? द चेंजिंग रूम इज ओवर देयर. अब चेंजिंग रूम क्या होता है? जहां पर आप ड्रेस को चेक कर सकते हो कि इट इज कमिंग ऑन यू और नॉट, और मिरर्स आर देयर, सो यू कैन सी कि मिरर में आप देख सकते हो कि वो ड्रेस आपके ऊपर कैसा लग रहा है. दैट्स व्हाई चेंजिंग रूम आर देयर. ठीक है ना? आप
पहन के देखोगे कि इट इज लुकिंग गुड ऑन यू और नॉट, और it is of your size or not. So Lisa comes out and she says, the skirt is too small. बहुत छोटी है. Do you have it in a bigger size? तो she asked the assistant उसको हेल्प कर रहा था, तो उसको पूछती है कि इसमें बिगर साइज है क्या? तो असिस्टेंट बोलता है यस, हियर यू गो, और दूसरा स्कर्ट उसको निकाल के देता है, यस हियर यू गो, मतलब दूसरा पीस उसको दिया. लीजा सेज थैंक यू. Assistant, how was it, ma'am? Lisa says कि it fits well. I'll take it. बस ठीक है ना? I'll take it. Assistant says sure, ma'am. I'll get it packed. You can pay at the counter, right? And Lisa, okay and thanks. She leaves the store or that shop. ठीक है? Now, what you are going to do? Imagine you are in a shop. ठीक है? और या फिर it happened कि आप शॉप में गए हो, कभी आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा होगा, वट एवर शॉपकीपर सेड, ठीक है ना, वो अपनी नोटबुक में एक कन्वर्जेशन लिखोगे. वेन एवर वी विल मीट ना, ठीक है, कभी कनेक्ट भी होंगे तो वी विल टॉक अबाउट इट. ओके चिल्ड्रन, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट एक्सरसाइज इज देयर. नाउ सी, इट्स अ पिक्चर ऑफ व्हाट, एक शोरूम है एंड ये फर्नीचर का शोरूम है एंड द कन्वर्जेशन इज बिटवीन अनुज एंड बबीता. एंड नाउ व्हाट आर दे डूइंग? नाउ मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि वी आर गोइंग टू कंपेयर, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपेयर करेंगे, उसका क्वालिटी के ऊपर यू हैव टू कंपेयर. तो हाउ हाउ यू कंपेयर, ठीक है, एंड देन आइडेंटिफाई द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू कंपेयर प्रोडक्ट्स एंड टीच राइट योर पेयर्स इन क्लास. आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको डिस्कस कर सकते हो. कंपैरिजन आपका क्लास में भी बहुत सी चीजों के ऊपर कंपैरिजन हो सकता है, राइट. चलो लेट्स सी यहाँ पर ये एक्सरसाइज में क्या हो रहा है, राइट. कंपैर जितने भी वर्ड से कंपैरिजन हो रहा है जस्ट नोट देम, ठीक है ना. सी द फर्स्ट लाइन इज एंड इट इज बीइंग सेड बाय अनुज, ऑल दीज सोफाज आर सो नाइस. व्हाट इज अनुज सेइंग कि बहुत दीज सोफाज आर सो नाइस. विच वन शुड बी बाय? अब दोनों शायद हस्बैंड वाइफ है, राइट, एंड दे आर इन द शोरूम and they are thinking of buying a sofa. Now Babita says, this one is larger, but it's more expensive. I prefer the smaller one. Now larger means किसी दूसरे सोफे से it is larger. Now ये comparison आ गया ना, one is smaller, the other is larger. तो ये comparison हो गया, किस में हो गया? Size में comparison हो गया. Clear? Then she says कि but it's more expensive. ठीक है, विच इज मोर एक्सपेंसिव? द लार्जर वन. सो आई प्रेफर द स्मॉलर वन. मैं छोटा वाले को लेने को प्रेफर करूंगी. क्लियर है? ठीक है. तो यहाँ पर टू थिंग्स में कंपैरिजन हो रहा है, वन इज लार्जर एंड स्मॉलर एंड द अदर वन इज एक्सपेंसिव, राइट, एंड मोर एक्सपेंसिव. तो अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो वन इज चीपर देन द अदर. ठीक है. नाउ व्हाट अनुज सेज नाउ, ओके लेट्स लुक एट द कॉफी टेबल्स ओवर देयर. ठीक है, अब वो कॉफी टेबल्स के ऊपर देखते हैं कि ओके विच वन टू चूज. नाउ बबीता सेज, आई थिंक द ग्लास टेबल्स लुक बेटर देन द वुड टेबल्स. ठीक है ना, तो ग्लास वाले टेबल्स है, मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट है. नाउ दे आर कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, कि उनके मटेरियल के साथ, विच इज बेटर. ठीक है, ये भी कंपैरिजन हो रहा है, राइट. So one is going for wood tables and the other person is going for glass tables. What is Anuj saying here? I think we should buy a wood table. Anuj किसको prefer कर रहा है? Wood table को. It is tougher than glass. Tougher means वो एकदम से टूटेगा नहीं, strong है, ठीक है, and won't break. It is tougher than glass and won't break. ये break नहीं होगा जल्दी से. Now Babita says this one is made with tempered glass. ठीक है ना, कौन से ग्लास से बना? टेम्पर्ड. टेम्पर्ड ग्लास लाइक इट इज अ मटीरियल, ग्लास से ही बनता है बट इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, बहुत सी जगह यूज होता है आजकल. इट इज बीइंग यूज्ड इन हाउसेज आल्सो. और सेम टेम्पर्ड ग्लास इज यूज्ड ऑन योर मोबाइल स्क्रीन आल्सो. स्क्रीन के ऊपर लगाते हैं सो दैट स्क्रीन आपकी सेफ रहे. गिर भी गया तो इट विल नॉट ब्रेक, इट वोंट ब्रेक.
Yeah, so she says कि tempered glass and is equally tough. ठीक है, वो भी उतना ही टफ है, एकदम से टूटेगा नहीं, राइट? टफ इन अदर सेंस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? इट विल मेक आवर रूम लुक मच ब्राइटर एंड बिगर, ठीक है ना? अगर हम टेम्पर्ड ग्लास के साथ चलते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है और थोड़ा सा हमारा रूम बिगर लगेगा. नाउ व्हाट अनुज सेज, लेट्स गेट सम क्वेश्चन कवर्स. अभी ये तो डिसाइड कर लिया उन्होंने, वुडन वाला नहीं लेंगे, दे विल गो फॉर विच वन, द ग्लास वन. और कौन सा ग्लास है? टेम्पर्ड ग्लास है, right? Okay, now they are going for cushion covers. What Babita says, I like these red ones. What do you think? Right, Anuj? I like the red one. I like the red ones too. ठीक है, उल्टा मैं मुझे भी जो है रेड वंस जो है अच्छे लग रहे हैं, बट आई थिंक द ग्रीन वंस आर बेटर. ठीक है, व्हाट इज सेइंग कि नाउ ही लाइक्स रेड कुशन्स बट ग्रीन वंस आर बेटर एंड द ब्लू वंस आर द बेस्ट. ठीक है ना? बेटर तो क्या होगा? बेटर इज कंपैरिजन बिटवीन टू, कि ठीक है ये इससे अच्छा होगा, इससे अच्छा. बेस्ट है मींस इट इज ओनली वन, वो बेस्ट, राइट? दे विल गो वेल विद आवर कर्टेन्स. क्यों बोला उसने व्हाई दीज आर बेस्ट? क्योंकि देयर मे बी सम मैचिंग विद द कर्टन्स ओवर देयर. ठीक है, राइट? सो वी कंपेयर एट होम ऑल्सो. सो व्हेन वी गो फॉर शॉपिंग, तो हम लोग कंपेयर तो करते हैं ना बहुत सी चीजें. ड्रेस लेते हैं, कंपेयर करते हैं इट्स क्वालिटी, राइट? हम टच करके देखते हैं ना, फैब्रिक को टच करके देखते हैं. मम्मी के साथ जाते हो तो मम्मी करती हैं. अभी तुम लोगों को तो उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट योर मदर डज, राइट? कि इट्स क्वालिटी इज गुड, राइट? प्राइस भी सही है, प्राइस कंपेयर करके देखेंगे, right? And sometimes what happens, when you go to the market, like if I'll say greengrocer word we used, ठीक है ना? Means the place where we get fruits and we get what? Vegetables. तो वहां पर भी क्या होता है, मम्मी जब लेती हैं वेजिटेबल्स तो व्हाट मम्मी मम्मी डज, क्या करती हैं कि वो साइज क्वालिटी चारों तरफ से सही है नहीं है, शी कंपेयर्स फ्रॉम लाइक फ्रॉम पर्टिकुलर वन पीस विद द अनदर पीस. ठीक है, दूसरे पीस से कंपेयर करती हैं कि उसकी फ्रेशनेस, उसका साइज, वट एवर, देर आर सर्टेन पैरामीटर्स. ठीक है, कंपेयर करके एंड देन शी परचेज देम. ठीक है, सो वी विल गो विथ सम अदर एक्सरसाइज ऑल्सो. विल डू वन मोर एक्सरसाइज. ठीक है, देन वी विल व्हाट, नाउ यू विल लिसन टू द ऑडियो. ठीक है, एंड देन वी विल फिल आंसर्स ओवर हियर. ओके? How much is the capsicum for? 20 rupees a kilo. Give me half a kilo. Oh, and 1 kilo of onions and 1 kilo of cucumber, please. How much is this head of lettuce for? 50 rupees for this one. Oh, that's too much. Do you have a small one? Yes, this one is for 30 rupees. Yes, this is fine. Give us this one. Okay, so what is the first question? Sonia and Zen went to buy, कहाँ गए दोनों? Went to buy vegetables. क्या आएगा यहाँ पर? In first blank, what will come? Vegetables. Second one is they buy dash of capsicum. कितनी capsicum लिए थे उन्होंने? Now what is capsicum? शिमला मिर्च होती है ना, that is capsicum. ठीक है? So they buy half a kilo of capsicum. Clear? Third one is the big head of lettuce cost. अब ये lettuce क्या होता है? एक big leaf होती है. It is used in salad. ठीक है, सैलेड की ड्रेसिंग के लिए भी इट इज अगेन वेरी न्यूट्रिशियस. आयरन होता है उसमें ढेर सारा, राइट? इट्स गुड टू हेल्थ. ओके, सो हाउ मच इट कॉस्ट? इट कॉस्ट ₹50. कितना था हमने सुना था अभी? इट वॉज ₹50. ओके, नाउ फोर्थ वन इज द स्मॉल लट्यूस कॉस्ट. अब जो बिगर वन था इट वॉज फॉर ₹50. नाउ हाउ मच फॉर स्मॉल लेट्यूस? इट इज ₹30. Okay, now fifth one is they buy the dash head of lettuce. उन्होंने कौन सा वाला lettuce लिया? Big head लिया या फिर small? They went for the smaller one, है ना? So they buy the small head of lettuce. Okay, here are all the answers. Okay, okay children. So today we learned certain words when we go for shopping.
like, okay, so certain English words are there when we use them, when we go for shopping we use them, ठीक है ना? And what are particular shops called, like when the person who sells medicine is known as chemist, ठीक है? The person who sells fruits and vegetables is known as greengrocer, है ना? And we get milk from, एक तो हमें डेयरी से मिलता है, राइट, फार्म से मिलेगा, एंड वेयर एल्स, अभी सिटीज में तो इट इज मिल्क बूथ ओनली, ओके. सो वी लर्नड अबाउट द वर्ड्स यूज्ड व्हाइल वी आर गोइंग आउट फॉर शॉपिंग, ठीक है? So you will also do some homework. Now what homework you are going to do? You will write certain sentences where like you go for shopping and you use particular words. ठीक है ना? You ask for something. Imagine you are in a shop where you are going to purchase some dress for you. ठीक है? Clothes merchant के पास आप जाते हो, right? And write some conversation आपके बीच में and the shopkeeper. So आप तो मुश्किल जाओगे शायद, बट यू विल गो विद योर मदर और योर फादर, तो उनके बीच में जो आपको याद होगा पुराना कन्वर्सेशन, यू विल राइट इन योर नोटबुक्स, ठीक है? दिस इज द होमवर्क ओनली. सो वेन एवर वी विल मीट वी विल डिस्कस ऑन दैट. ओके, चलो फिर विल मीट टुमारो. नाउ टिल देन, बाय बाय.